ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। पंचमस्कन्धः। यत्रामिलोकविस्तारास्तारा एव विहायसि भासन्ते तमहं वन्दे बालगोपालमालयम्। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमो पारायण है। प्रियव्रत चरित्र पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। राजोवाचा, राजा परीक्षित जी ने पूछा, प्रियाव्रतो भागवता आत्मरामः कथं मुने गृहे रमता यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभः गृहे स्वाभिनिवेशोऽयं पुंसां भवत्तुमर्हति महतां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयो छाया निवृत्तिचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामति संशयोऽयं महान् मुर्मन् दारागारसुतादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरा भूत्कृष्णे च मतिरच्युतां। श्रीशुक उवाच, बाढमुक्तं भगवता उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्द मकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत परमहंस दयित कथां किञ्चिदन्तराया विहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि वावः राजन् राजपुत्रा प्रियवर्ता परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगत परमार्थसत्तत्त्वो ब्रह्मसत्त्वेन दीक्षिष्यमाणो वनितलपरिपालनायां नायां प्रवरै गुणगणैकान्तभाजनतया पित्रोपामन्त्रितो भगवते वासुदेवः एवाभ्यवधानसमाधियोगेन समावेशितशकलकारकक्रियाकलापो नैवाभ्यनन्दद्याद्यपि तदप्रत्याम्नादमभ्यं तदधिकरण आत्मनोऽन्यस्मादसदोऽपि पराभव माना अतः भगवानादिदेवः एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृंहणानुध्यायन् व्यवसितः सकलजगदभिप्राय आत्मयोनिरखिल निगम निजगण परिवेष्टितः स्वभवनादवतारम् स तत्र तत्र गगनतल उड्डुपतिरिवा विमानावलिभिरुभिरानुपथ ममर परिवृढैरभिपूज्यमानः पथि पथि च वरुथसा सिद्धगन्धर्वसाध्या चारणमुनिगणैरूपगीयमानो गन्धमादनद्रोणे मम भासयन्नुपससर्प तत्र हवा एनं देवर्षिंहंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः सहसैवोत्थायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्यामवहिताञ्जलिरुपतस्थे भगवानपि भारत तदुपनीतार्हण सूक्तवाक्येनादि नातितरा मुदित गुणगणावतार सुजयः प्रियवर्तमादिपुरुषस्तं सदया हासावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच, निबोधतातेदमृतं ब्रवीमि मासु इदं देवमहर्षप्रमेयम्
वयं भवस्ते तत एष महर्षिर्वहम सर्वे विवसा यस्य दिष्टं न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मैः परतः स्वतो वा कृतं यन्तुं तनुभूयाद् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगामव्यक्तदिष्टं जनतां दत्ते यद्वा चिन्त्यां गुणकर्मणामभिं सुदुस्तरैर्वत्स भयं सुयोजितः सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीवा द्विपदे चतुष्पदा ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्धमहेङ्गा दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्घात् आसाय तत्तद्यद्युं तुनादाय चक्षुर्मदान्धा इव नीयमाना मुक्तोऽपि बिभ्रियात् स्वदेहं मारब्धमस्नन्नभिमानशून्यः यथानुभूतं प्रदयादनिद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान्न भूमृङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते स षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गिराश्रमा किं न करोत्यवद्यं या षट्सपत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वेश्य यतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गा श्रुतिगोर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरे द्विपश्येत्तं तब्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेव भोगान् पुरुषातिदिष्टान् विमुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व श्रीशुकवाच इति समाभीतो महाभागवतो भगवस्त्रिभुवन गुरोरनुशासनमात्मनः लघु यावनतशिरोधरो बाढमिति सबहुमानमुवावः भगवानपि मनुरा यथा वधूपकल्पिता पचितिः प्रियावर्तनारदयो रविशमभिसमीक्षमाणो योरात्मसमवस्थानववाङ्गमनशं क्षयमव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत मनुरपि परेणेवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुरर्षिवरानुमतेनात्मजमखिलधरा मण्डलस्थिति गुप्तयः आस्थाप्य स्वयमति विषजलाशयासाय उपररामः इति हवावासः जगति पतिरीश्वरे क्षयाधीने वेशिताय कर्माधिकारोऽखिल जगद्बन्धध्वंसन परानुभावस्य भगवतादिपुरुषस्याङ्घ्रि युगलाय नवरदध्यानानुभावेन परिरन्धिता कषायाशयो वदातोऽपि मानवर्धनो महतां बहितल मनुशशास अथ च द्विधरं प्रजापतिर्विश्वकर्मणः उपयेमि बरीजमतिं नाम तस्यामु हवावा आत्मजानात्मः समान् शीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान्दश भयां बभूवा कन्यां च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम आग्निध्रीधमं जिह्वा यज्ञ बाहु महावीर हिरण्य ऋतुघृतपृष्ठसवनमेधातिथि विधिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतेषां कविर्महा
वीरासवनिधि त्रया आसन्नूर्ध्वरेतशस्ता आत्मविद्यायां मर्भभावादारभ्य कृतपरिचया पारमहंस्यमेवाश्रममभजन तस्मिन्नुहवा उपशमशीलाः परमर्षया सकलजीवनिकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणारविन्दा विरत स्मरण विगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तर हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मान्ये वात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण समीयुः अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नुत्तमा स्तामसुरवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवामुपशमायनेषु स्वस्तनैश्वस्ता जगति पतिर्जगतिर्मर्बुद्ध्या मर्बुदान्ये नेकादश परिवत्सराणां मव्याहता किल पुरुषकार सार संभृतर्दुर्दंड युगला पीडितर्मौर्विण गुणस्तना स्तन्नित विरमित धर्म प्रतिपक्षो वरिष्ठमत्या चानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसरणा योषिण्या ब्रीडा प्रमुसेत हासावलोकः रुचिरक्षी रक्षिल्यादिभिः पराभूयमान विवेका इव नव बुध्यमाना इव महामनः भुभुजे यावद्दवा भासयति सुरगिरि क्रामन् भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव तत्पर्येधेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोपचितातिः पुरुषप्रभावस् तदनभिनन्दन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकीर्तस्तरणीन्मनो मनोपर्यक्रामदे द्वितीया इव पतंगः इवावोह तदर्थ चरणनेमिः कृतपरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन यत एव कृताः सप्त भुवो द्वीपाः जम्बूपलक्ष शाल्मली कुशक्रौञ्च शाकपुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्वस्मादुत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्ताः क्षारोदेक्षुरसोदघृतो दक्षिरोदधे क्षीरोदधे शुद्धोदाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिघा इवाभ्यन्तर द्वीपसमाना एकैकस्येन यथा पूर्वं सप्त स्वपे बर्हिर्द्वीपेषु पृथक् परिता उपकल्पितास्तेषु जम्बुवादिषु बर्हिर्मध्ये परिरनुवृत्तानात्मजा आग्नेध्येर्धमाजिह्वाय च बाहु हिरण्यऋतु घृतपृष्ठमेधातिथि विधिहोत्र संज्ञानः यथा संख्ये नैके कस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे दुहितरं चोर्जस्वतीं नामो सनसे प्रायच्छद्यस्यामासीद देवयानी नाम काव्यसुधा नैवं विधा पुरस्कार उरुक्रमस्यां पुंसं तदङ्घ्रे रजसा जितसन्गुणानां चित्रं विदुरविगतः सकृता ददीता यन्नामधेयमधुना स जहाति बन्धं
स एवमपरिमित बलपराक्रम एकदा तु देवर्षि शयनहारुपतित गुणविसर्ग संसर्गेण निर्वृत्त मिवात्मानं मन्यमानः आत्मनिर्वेदः इदमाह अहो असाध्यानुष्ठितं यदा विनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्या रचित विषयान्धकूपे तदलमलमामुष्यं वनिताया विनोदमृगं गां धिगिति गृह्याञ्चकार परदेवताः प्रसादाधिगतात्म पर्त्यावमर्षीणानुः प्रवृत्तिभ्यः पुत्रेभ्यः इमां यथा दायं विभज्य भूता भोगां च महिषीं मृतकमिवासः महाविभूतिमपहाय स्वयं निर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससारः तस्याः वा एते श्लोकः प्रियवर्ता कृतं कर्मं को नु कुर्यादुनेश्वरम् निम्नैरकारोच्छायां घ्नन्ना वारिधीन् भूसंस्थानं कृतं येन शरीरगिरिवनादिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महितं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजनप्रियः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कंदे प्रियव्रत विजये नाम प्रथमो पारायण प्रत्याचन्दो मम कामाः पुनः सन्तु मनोरथाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब है आग्नेध्र चरित्र का वर्णन आता है। श्री सुखवाचा सुख जी कह रहे हैं, एवं पितरे संप्रवृत्ति तदनुशासने वर्तमान आग्नेध्रो जम्बूद्वीपे कसः प्रजा औरस वधर्मावेक्षमाणः पर्ययो गोपायत स च कदाचित् पितृलोकनकामः सुरवर वनिता क्रीडाचल द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां प्रतिमा भृत परिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराधयां बभूव। तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वं चित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास सा च तदाश्रमोपवनमतिरमणीयं विविध विटपिवीटप निकर संश्लिष्ट पुरटलतारूढस्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यामान सलिल कुक्कुटकारण्डव कलहंसादिभिरविचित्रमुपपूजितामलजलाशय कमलाकरमुपब्रह्मां तस्याः सुललितगमनपदविन्यासः गति विलासाय शानपदं खणखणायमान रुचिरचरणाभरण मुपाकर्ण्या नरदेवकुमारः समाधियोगे न मिलितनयनः नयननलिन मकुलयुगलमीषद्विगचय्या व्यचस्ता तामेव विदुरे मधुकरीमिवामुसुमनसा उपजिघ्रन्ति दिवि नुजमनो नयनाह्लादे दुर्गैर्गति विहार व्रीडाय विनयावलोक सुस्वराक्षरः वैरमनसि निर्णहां कुसुमायुधस्य विदधतिं
विदधतीं विवरं निजं खल्वि कवि गलितः मृता शवस्यास भाषणा मुहुध मधान्ध मधु निकरो परोधेना द्रुतपद विन्यासेन वल्गुस्पन्दन स्तन कलश कबर भाररसनां देवीं तदवलोके लोकनेन विवृतावसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वसमुपनीतो जडवदिति होवाच का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिर्वर्य शैलै कथं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्यसे शैलै मायासि कापि भगवत्परदेवताय विज्ये बिभर्षितनुजे सुहृदात्मनोऽर्थे किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान् बाणाविमो भगवता शतपत्रपत्रौ शान्ता वपुङ्करुचिरावतिदिग्मदन्तौ कस्मयुङ्क्षसि वने विचरन्न विद्मा क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु शिष्यायिमे भगवता परिताप पठन्ति गायन्ति सामसरहस्यमजस्रमीशम् युगमच्छिका विलुलिता सुमनो विवृष्टे सर्वे भजन्त्रिषिगणा इव वेदसागा वाचम्बरं चरणपञ्जरते त्रीणां ब्रह्मन्नरूपमुखरां शृणवामवगुभ्यं लब्धा कदम्बरुचिरङ्गबिडङ्गबिम्बे यस्यामलादपरिधि क्वच तवद्करं ते किं संवृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये किशो वहसि यात्र दर्शिसितामयं पङ्कुरुणासुरभिराप्यमिषाणैद्रे येनाश्रमं सुभगमे सुरभिकरोषि लोकं प्रदर्श्य सुहृदं लोकं प्रदर्श्य सुहृदमातावकं मे यत्रत्ययेथमुरसा वयवावपूर्वौ अस्मद्विधैष्यामनवन्नयनो बिभर्ति ब्रह्मद्भुतं सरसराससुधादिवग्ध्रीं कावात्मभिर्दिरदनान्धभिरङ्गवादे विष्णुकलाशनिमिषोन्मकरौ च कर्णौ विद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिरुशोचि रासन्नभृङ्गनिकरं सरसिंमुखं ते योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दीक्षु भ्रमन् भ्रमत ये जयते क्षिणी मे युक्तं मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरतिलं पटये सुनीमिं रूपं तपोधनतपै शरदां तपोघ्नम् एतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धं चर्तुं तपोरहसि मया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन् मनो दृगपिनो न वियाति लग्नं मां चारुशृङ्गिरहसिने तु मनोव्रतं ते चित्तं यथा प्रतिशरन्तो शिवा सजीव्यां श्रीशुकवाच इति ललनानुनयाति विशारदो ग्राम्या वेदग्ध्याया परिभाषयातां विबुधमतिरधिसभाजयामास
सा च तस्या वीरयुता पतिर्बुद्धिशीला रूपवया श्रियो द्रार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतः युत परिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिनः भौमा स्वर्गभोगान् बुभुजै तस्यामुहवा आत्मजाना सह राजवरः आग्नेयद्रौ नाभिः किं पुरुषः हरिवर्षिलावृतरम्यक हिरण्मया कुरु भद्राश्वः केतुमाल संज्ञानवः पुत्रा न जनयत् सा सुत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापहाय पूर्वाचित्तिर्भूया एवाजं देवमुपतस्थे आग्निद्रः सुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्ति केन वा न बलोपेताः पित्रा विभक्ता आदमतुल्या मनामानि यथा भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजा आग्निद्रोराया तृप्तः कामानामप्सरसमेवानुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ति संवरेति पितरि नवमभ्रातरो मेरुदेवी प्रतिरूपामुग्रदृष्टिः लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीति मिति संज्ञां नवोदवहनः हना। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचमस्कन्धे आग्नेयद्रः वर्णनं नामो द्वितीयोपारायण सत्यासंतमुनिकामः पूर्णसंतमनोरथः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो।